Hi guys, and welcome to Cricket Caviar. And today I have with me Devanshu, and this is your host Shikhar. So we are going to discuss about a little bit about IPL. And Devanshu, I am surprised. Last three matches मैंने जो prediction किया था, उसके हिसाब से गया नहीं कुछ last three matches. Although prediction was going quite well till the first six matches. Are you surprised by KKR beating RCB? It was the Lord Thakur show. और उसके बाद I think there was another surprise in one of the matches. So, like, are you surprised how the IPL is going on? Uh, I mean, no, because RCB is back to form. Seriously, their original form of. And secondly, I think KKR win was one of the very best matches that I have seen in IPL for a long time. Because I think first 11 overs, if someone has just watched 11 overs and just switched off the TV, they will think that RCB will win hands down. But next Yes. 30 overs, they were just routed from the ground, and only one player. I mean, Shardul Thakur. I think, in fact, in Mr. Nag's video, uh, Mr. Nags has asked Shardul, "Why are you so talented?" so, so नहीं that is अरे one of the reasons. अरे देवांशु भाई आपने जैसा बोला ना मेरे साथ एग्जैक्टली वैसे ही हुआ एक्चुअली आफ्टर रसेल गॉट आउट करण शर्मा आई रिमेम्बर ही वाज बॉलिंग अ वेरी गुड स्पेल फॉर आरसीबी और वो जैसे ही उसने रसेल को आउट किया उसके बाद इनफैक्ट आई 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 स्विच्ड ऑफ माय टीवी बिकॉज आई हैड सम वर्क और मैं आके जब टीवी स्विच ऑन कर रहा हूँ तो केकेआर का लास्ट ओवर चल रहा है एंड मैं देख रहा हूँ स्कोर कार्ड में शार्दुल ठाकुर है स्कोर 68 ऑफ 29 एंड मतलब जब भी मैं डिस्कस कर रहा था जब भी इंडियन टीम को मतलब कि कोई जरूरत होता है ऐसे टाइम्स पे जैसे हमने गैबा में देखा फिर हमने ओवल में देखा तो शार्दुल ठाकुर एक काउंटर अटैकिंग नॉक से ऑपोजिशन का मोरल ही पूरा वो कर देता है डिवेस्टेट कर देता है एक तरह से और उसने ऐसे ही किया मतलब सिराज का रिदम पूरा तोड़ दिया सिराज एंड हर्षल बिकेम द वर्स्ट डेथ बॉलर्स ऑफ द वर्ल्ड ऐसा लग रहा था उस टाइम और इट वाज अ शॉकिंग काउंटर अटैक और केकेआर को 204 89 फॉर 5 से 204 पहुंचाना आई मीन दैट्स जस्ट अमेजिंग बैटिंग Amazing. I mean, any adjective we use for Shardul Thakur will be, I think, not justify his his talent. To be honest, I mean, he's just unbelievable. Sometimes he brings out those kind of performances that we expect from Hardik Pandya or maybe let's say Rishabh Pant, and he does it very consistently. Shardul Thakur. So I mean, it needs to be studied and researched more. Like why, how he is doing that. I'm very happy for Shardul. And also just to bring one point here, I think KKR is unlucky in this count that they could have won the first match, which stopped with DLS, and LSG was very lucky that they got a win out of that match. नहीं पता है Otherwise, they शार्दुल would का have won. मैं आपको एक पॉइंट बोलना चाहूंगा देवांशु इफ यू सी हिज बैटिंग टेक्निक he doesn't try to hit the ball very hard it's mostly he tries to मतलब connect get a good connection उसका ये है कि बैट मतलब अच्छे से लग जाए बॉल पे बस मतलब इट्स नॉट लाइक ही इज ट्राइंग टू मसल द बॉल यू नो ऐसा उसका कभी अटेम्प्ट नहीं रहता है एंड दैट इज आई फील द की टू हिज सक्सेस मतलब कि ही इज अ वेल बिल्ट मैन बट ही इज नॉट अ मसल यू नो रिप्ड गाय वैसा कुछ नहीं है बट Yeah, you are right. In post-match presentation, he told specifically this. He himself admitted that I don't know from where it came. So he is being very honest that these kind of just, I mean, it has happened like now 4 to 5 times. So clearly, it's not a fluke. There is some method to his madness, and I'm hopefully that similar innings keeps on coming not only in IPL but for Indian cricket. yeah That is much more important. So yeah, exactly I mean, okay. In that same match only, Sunil Narayan and Varun Chakravarti. I mean, they are
good, and definitely they just demolished RCB again. मुझे लगता है केकेआर का एक स्ट्रेटेजी ये 5 साल से चल रहा है, चक्रवर्ती और नारायण का। बाकी सारी टीम्स ने अपने अपने डिफरेंट बॉलिंग स्ट्रेटेजी और बॉलिंग प्लान्स चेंज कर दिए, बट केकेआर ने कभी भी चेंज नहीं किया। उनका 5-6 साल से यही दोनों का चल रहा है कि नारायण और चक्रवर्ती करेंगे। और इस बार कोलकाता में लकीली दे हैव द होम एडवांटेज, और वहां पे उन्होंने थोड़ा स्पिनिंग ट्रैक्स भी बना रखा है। तो यार चक्रवर्ती ने तो अमेजिंग, मतलब वो इन स्विंगर डाल रहा था, मुझे ऐसा लगा उसकी बॉल को इतना हाँ, एयर में मूवमेंट मिल रहा था। एंड अब लास्ट I have a सीजन, question. Is Shakib out of the IPL? yeah, Shakib has withdrawn out of Oh IPL. man, if Shakib would have been there, then Shakib, Narayan, and Varun Chakravarti would have been lethal हम्म। in every ground. नहीं, शाकिब के जगह उन्होंने What it is? उस जेसन रॉय को ले लिया। पता नहीं क्यों जेसन रॉय को लिया है। Ah, हाँ, I mean, fine. They didn't have any other option also, right? For any spinner, हाँ, they would have taken. बट I think जेसन रॉय नहीं खेलेगा। KKR missed out on Sikandar Raza in auctions. They could have gone with Sikandar Raza. मुझे तो लग रहा था दसुन शनाका को जो गुजरात टाइटंस ने लिया ना, उसको उसकी जगह केकेआर शुड हैव आई थिंक गॉन फॉर दसुन शनाका। ऑल्दो दे हैव डेविड वीजा एज बैकअप फॉर रसल, बट मुझे लगता है ऑलराउंडर में उनको थोड़ा चाहिए था, क्योंकि रहमानुल्लाह गुरबाज इज प्लेइंग वेल। आई मीन रहमानुल्लाह गुरबाज स्टार्टेड ऑफ वेल दैट डे आल्सो, जब बाकी प्लेयर्स उतना टच में नहीं थे। तो आई थिंक And he's a रहमानुल्लाह keeper गुरबाज, also. हाँ, इज द कीपर आल्सो। तो ऐसा हाँ, जेसन तो I रॉय mean, आके कुछ करेगा नहीं वैसे। तो रहमानुल्लाह हाँ, गुरबाज, Jason Roy will not come, and there is a very interesting fact for Jason Roy also. So his base हम्म, price was 1 CR, हम्म, right? And KKR got him as replacement for 1.8 CR. हम्म, So which is unheard of, because usually if a replacement is coming, they usually come on the base prices. हम्म, So that was very interesting. हाँ। और एक या कुणाल इज हियर आई थिंक, या है कुणाल। Nice. Hello. देवांशु, एक और चीज इंटरेस्टिंग था कि शार्दुल ठाकुर का वैल्यू इज एक्चुअली 10 crores, which is lot of people were asking questions कि why you are giving 10 crores to a player like शार्दुल ठाकुर। मतलब कि वो एक्सपेंसिव ही रहता है बॉलिंग में मोस्टली। तो आई मीन हाउ ही हैज आंसर्ड हिज क्रिटिक्स सो वेल, मजा आ गया मुझे तो वो इनिंग्स देख के। Okay, yes, in Indian cricket, there are two similar players, Shardul Thakur and Deepak Chahar. So Deepak Chahar is 15 CR, if I'm not wrong, 15 हाँ, CR. And Shardul Thakur is 10 CR. So I guess the skill set that they bring to the table, it's not available in Indian cricket. So I think 10 CR, 15 CR is okay. In fact, I think that Shardul Thakur is like got the less 10 CR. He should have been around 12 CR at least. Because Unai once sold out for 12 CR. So yeah. I mean, इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू मेंशन दीपक चहर एंड ये दोनों एक्चुअली साउथ अफ्रीका जब हम टूर किए ना, तो ये लोग ओडीआई सीरीज में साथ खेल रहे थे, एंड बोथ गिव वेरी गुड परफॉर्मेंस जब इंडिया का टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो रहा था। तो ये दोनों फाइट बैक्स प्रोड्यूस कर रहे थे, ऑल्दो हम 3-0 व्हाइट वॉश हो गए थे उस सीरीज में। लास्ट में दीपक चहर ने एक बहुत अच्छा नॉक खेला था, जो फिर फिनिश नहीं कर पाया था, 10 रन या ऐसा कुछ शॉट रह गया था इंडिया। But yeah, these two are valuable assets for ODI cricket, I think. Matlab, not diverting from the topic, but yeah, let's stick to IPL. But yeah, I can understand what you are trying to say on this. Second up, so Kunal, what is your thought on KKR miraculous win? So KKR had almost lost the match. Right? People already cursing the whole KKR scheme of things left, right, and center. Lekin Shardul Thakur did save them in the end. Yeah, lekin Shardul Thakur has blown hot and cold over the years. He has not been very consistent. Deepak Chahar though has been, lekin abhi injury ke baad, I mean, not really. But it was refreshing to see Deepak Chahar coming that way, and RCB collapse. You cannot rule out our RCB collapse though. शार्दुल ठाकुर को देख के मुझे पता है कौन याद आता है। मुझे अजीत अगरकर याद आता है, क्योंकि पता है वो भी
ऐसे एक्सपेंसिव रह के विकेट टेकर था, मतलब एक्सपेंसिव रहता था, विकेट्स लेता था, और बैटिंग में भी he was okay, मतलब in white ball cricket he was a decent bat. Lord's But Test here and this is different. Here it is different. Shardul is better batsman than Agarkar, and Agarkar was a better bowler than Shardul. So both have their pros and cons. Agarkar was a specialist medium. Shardul is more of an all-rounder. Difference. नहीं तो ठीक है, लेट्स मूव अवे फ्रॉम दिस मैच. अब मैं लखनऊ के सुपर जायंट्स की तरफ आना चाहूंगा. क्या पिचेस बना रही है लखनऊ? दे आर प्लेइंग टू देयर एडवांटेज. केएल राहुल सेड कि हमें पहले से ही पता था पिच ऐसा होगा, और बहुत मस्त अमित मिश्रा और सबको ले आए वो लोग टीम में. पूरा स्पिन बॉलिंग एग्जीबिशन था. एक तरफ बिश्नोई, मिश्रा, कृणाल पांड्या, तो दे न्यू व्हाट दे आर गोइंग टू प्ले. वहीं पे एसआरएच को कुछ भी आइडिया नहीं था इस पिच का. वो 3 फास्ट बॉलर लेके गए, उमरान मलिक, नटराजन, भुवनेश्वर कुमार. तो और जब इम्पैक्ट प्लेयर की बारी आई तब भी वो फजल हक फारूकी को लेके आते हैं, जबकि उनके पास मयंक मार्कंडे था एज एन ऑप्शन. और वेरी डिसअपॉइंटिंग बैटिंग आई थिंक फ्रॉम एसआरएच. अगर आप उस पिच पे कैसा भी पिच रहो, यू कांट बी स्कोरिंग रन अ बॉल. मतलब कि आप रन अ बॉल टारगेट is never going to be enough on any pitch. You have to look to score 140 150 at least. तो क्या उस मैच के बारे में आप दोनों के क्या थॉट्स हैं? मैं जस्ट ऐसे जानना चाहता हूं. I think looking from strategy and management perspective, LSG has did really well. They built a really good team. हमने last season ये देखा, गंभीर is pretty smart, right, when it comes to managing a team, managing his players. लेकिन वहीं पे SRH has been थोड़ा पता नहीं very थोड़ा confused. ठीक है, changing captains, changing the whole management team. तो SRH का things are not falling into place from that perspective. People are even questioning कि Aiden Markram को captain क्यों बनाया. I mean, he's a good player, but we don't know how he'll perform in Indian conditions. So that is where KKR, I mean, that is where LSG is doing well. Strategy में and SRH में पता नहीं. I'm not sure Brain Lara is just new, I guess, to all this. So I have like first of all, this match reminded me of an Ahmedabad test match, pink ball test, where India went with 3 or 4 spinners and England went with 4 seamers. So that's a similar match. And also I'm okay with the LSG preparing these kind of turning wicket, because CSK also does the same thing in Chepauk. So Since years. Yeah, so it's fine. I mean, it brings different kind of challenge, and I'm pretty sure when LSG will go to Hyderabad, their spinners will not even able to turn one ball, because it will be a fast wicket, because SRH has a good fast attack. So that's going to happen. And again, I'm just a bit on that Harry Brook. I think Harry Brook is like fish out of water in India. I have this theory that he might not have a good IPL, apart from 1 inning or 2 inning here and there, but he will not be able to make an impact. His technique is mostly for flat wickets, similar to what Josh Butler started earlier. Maybe he will grow eventually. नहीं, इसमें मुझे एक और चीज था कि हाइनरिक क्लासन जो मतलब एज एन इम्पैक्ट प्लेयर था, ही हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल इन इंडिया. तो यू नो maybe Harry, so this is again the mistake which Delhi has made, making Warner the captain. Now they can't drop Warner. अभी मार्करम को ये लोग ड्रॉप नहीं कर पाएंगे throughout the season, because they have made Markram the captain and they have option like Klassen, who is actually better than Markram in Indian condition. तो आप actually Klassen को खिला सकते थे वहां पे. It's not straight to red. Markram goal also, और दिल्ली के केस में वार्नर has नहीं किया ना उसने बॉलिंग. कल कहाँ किया बॉलिंग मार्करम ने? कल इतने टर्निंग पिच पे जब उन्होंने मार्करम ने बॉलिंग नहीं किया, मार्कंडे ने बॉलिंग नहीं किया, तो अब कहाँ बॉलिंग करेंगे? फ्लैट हैदराबाद पिच पे बॉलिंग करेंगे अब, जहाँ पे 203 बनाए थे. Did you see SRH had a good impact player strategy? उन्होंने 3 फॉरनर्स खिलाए थे और क्लासन पैडेड अप होके बैठा हुआ था डगआउट में. तो क्या फायदा हुआ? not send him to they had a very good strategy, but ऑन द फील्ड जब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आया तो उन्होंने वही किया. फजल हक फारूकी को लेके आए ऑन अ टर्निंग ट्रैक. ठीक है, वो तो आई एग्री विद यू. मतलब दे हैड वेरी गुड थिंकिंग. वो लोग क्लासन को भी ला सकते थे लास्ट में, लेकिन वो लोग बोले नहीं, अब तो एनीवे हम 120 ही बनाने वाले हैं, हम बॉलर में स्ट्रेंथन करेंगे. और बॉलर में भी वो फजल हक फारूकी को लेके आए.
तो I didn't. I have a Markram theory here. form और Markram ने I think अभी काफी runs बनाया, right? उसका पहला ही Regarding game. Markram, I have no problem with Markram as a captain. The only thing is Markram himself has very less experience in India, playing in India. So that's the only challenge he might face. He will grow as a captain, but they have to play Klassen anyhow. And they have to figure it out how he will play. Markram and Klassen both needs to be in the team. And Klassen is a keeper, so they have to sort it out how they will go. And they left out Abhishek Sharma for which- Anmolpreet which Singh. didn't. Now what happened is Abhishek Sharma, he's a opener and he's a left arm spinner. And on this wicket, Yeah. he would have been very handy. Very handy. I don't know why he dropped them. Because keeper ही नहीं है. Last keeper नहीं है तो अनमोलप्रीत सिंह से उन्हें कीपिंग कराना पड़ा. And Anmolpreet Singh keeping was horrible. Terrible keeping. बहुत खराब keeping था. So I don't think this experiment will happen in the next match. Actually first But game में SRH किसने कीपिंग किया था SRH के लिए फिर? जब अनमोलप्रीत नहीं था, अभिषेक था. I think वो मैच का मैं देखता हूँ एक बार. I think there was some foreign player who kept. नहीं तो आज न्यूजीलैंड guy. अच्छा Phillips. ग्लेन फिलिप्स भी नहीं था कल. हाँ ग्लेन फिलिप्स भी नहीं था. राइट They उसको have भी good ड्रॉप कर players. दिया. सच में. One of the So best T20 players of the world. वो भी नहीं था. Actually, SRH had a very terrible strategy for yesterday match. Terrible. Yes. So that's why they lost. And I think if proper cricketing sense prevails in the next match, so they will revert back to Abhishek Sharma as an opener and Klassen as a keeper. So I think it will sort it out for them. But you'd bring in Klassen in whose place? मतलब अच्छा ठीक 4 Klassen आ जाएगा. Farooqi is there, right? हाँ ठीक. They have a very good Indian pace attack. So to be honest, you don't need forcing. Yeah. I think SRH it's more about getting the combination and the strategy right. They have players though. अच्छा हम लोग ने वो वाले मैच पे बात नहीं की थी और आज फिर से राजस्थान का मैच है तो मैं एक बार आप लोग से पूछना चाहता हूँ लास्ट मैच व्हाट डिड यू फील वेयर राजस्थान रॉयल्स